In this video, I am giving information on a small bird species commonly called house sparrow, found in most parts of the world. But in the current scenario, its population is rapidly declining from some parts of the India, especially due to changes in the lifestyle of the modern or urban people. I will give brief information on its description, habitat, migration, and dispersal and breeding, but briefly. And it is this species is already listed as a least concern, especially in the red data book, in the IUCN red list. You know, house sparrow, or in Hindi commonly called as the Gauraiya. The scientific name is Passer domesticus. Is a species bird species from Passeridae family, found in most parts of the world. And by size, it is a small bird, has a length of 16 centimeter around, and mass means weight. By weight, it is 24 to 39, yeah, around 40 grams. And male and female especially, birds are different, pale brown in color, and pale brown and gray color, and smaller in size than male. And male have a bright black, white, and brown markings on the neck and head, and it is one of the 25th species in the genus Passer, and it is native to the most of the Europe, the Mediterranean Basin, and large part of the Asia. It is most widely distributed species because it's intentional and accidental introduction to many regions of the worlds, including parts of the Australia, Africa, and America. I know it is become widely spreading species. The sparrow is strongly associated with human habitation and can live in the urban and rural settings. Though found in varied habitat and climate, it avoids extensive woodland and grasslands habitat of the polar regions and hot and dry regions, far away from the human developments. It means it is more close to the it like to live in the surrounding of the human, habitations it prefers. And for sustenance, the house sparrow routinely feeds at home and public bird feeding station, in the road, especially chora or tea points. Generally, birds, some greens are kept for the birds, but no special any preparations for this, for the sustenance of this bird. And for sustenance, it feeds on the naturally seeds and grains and flowering plants and weeds. And it is also opportunistic, omnivorous. Omnivorous means there are three categories. One is herbivores, which feed on the herbs, herbaceous plant vegetation. Another is carnivores, mainly flesh eating. And third is the omnivorous. They can eat both grains as well as meat or flesh food. It is an omnivorous eater, and commonly catches insects, larvae, and caterpillars, invertebrates, small especially, and many other
for foods, and horse sparrow is culturally predominant, yeah, prominent species, as it is as its number and ubiquity. Ubiquity means widely spreading and association with the human settlements. It is a symbol of earlier it was a symbol. Some have thoughts about this species. It is kept as pet animals and for sexual potency, vulgarity. Though it is not abundant and widespread, its number have declined in some areas, especially the urban and rural villages. This um, avifaunal species is listed as a least concerned species in the IUCN Red List of threatened categories. Now, description about its size and shape. Horse sparrow is typically about 16 centimeter long, means ranging from 14 to 18 centimeter in length, and uh, the bill is stout and conical and adapted to for the eating seeds, and its tail is also short, 5.2 to 5.6.5 centimeter, and overall this is a small bird, and but it's it is a dimorphic. Both male and female differ in color and shape and size. Female generally smaller than the male, and the sexes exhibit complete dimorphic. The male is duller in duller and plus non-breeding, especially the feathers and the non-breeding plumage, and in breeding seasons especially its bill is dark gray color, and male has no black markings. In male the black markings and white is color, but in female has no black markings and gray crown, and the upper part of the head is brown mostly in the female, and voice, the aggressive voice, especially in the male, give a trill version of your calls, and like the chur 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 chur, transcribe as the chur 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 is some type of the voice in the male, and this call is also used by the female in the breeding season, or the dominance over the male, and house sparrow also give you a nasal alarm call and transcribe as a kurr type, and the habitat of this bird is closely associated with the human habitations and cultivated areas, especially the agricultural lands and surrounding orchards, and yeah, large number of the subspecies have been named. Around around 12 subspecies are recognized in the handbook of the birds of the world, and these subspecies are divided into two groups. One, the Palearctic, the Palearctic group. Palearctic, the one of the major ecological ecozones of the world, covering Europe, old USSR, and territories of the North Africa and Asia, and another is the Oriental group, the Passer domesticus indicus group as the Oriental group, and Passer domesticus domesticus
subspecies is the Palearctic group, and the Middle East subspecies, Passer domesticus, Biblicus, are considered as the third intermediate groups, but some ornithologists considered to be Passer domesticus, Biblicus to be distinct by species by many ornithologists. And the dispersal, for dispersal and migration, most of the house sparrow do not move more than a few kilometers during their lifetime, but limited migration is observed or occurs in all the regions. Generally, mountain birds move to the lower elevations, especially in the winter season, and house sparrow mostly in the hot and tropical and subtropical type climates occur abundantly, but in higher elevation or in climate higher altitude zones, it is not found abundantly or बहुत rarely seen. It is found up to the subtropical climate. And घरेलू गौरिया, जिसका कि हाउस स्पैरो को हिंदी में घरेलू गौरिया या गौरिया पक्षियों के नाम से जाना जाता है। पक्षियों के गौरिया पक्षी उनके पेसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है, यानी कि प्रजाति है। बायोलॉजिकल उसका नेम जो है पेसर डोमेस्टिकस है, और यह जो है जो विश्व के अधिकांश भागों में यह पाई जाती है। आरंभ में यह एशिया, यूरोप, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन मानव ने इसे विश्व भर में फैला दिया है, यानी कुछ तो इंटेंशनली और कुछ एक्सीडेंटली, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया इंट्रोडक्शन होता है कि कुछ को हम ज़बरदस्ती स्पीसीज़ को वहाँ भी फैलाने के लिए उसको लिया देते हैं, डोमेस्टिकेट कर देते हैं, और कुछ जो है एक्सीडेंटली चले जाते हैं किसी तरह से, वो किसी कभी शिप में वगैरह उसको वो गोरिया वहाँ चले गए तो वहीं वो जो है बढ़ने लग जाती है, उसका पॉपुलेशन जो है वो होता है, बशर्ते कि वहाँ पे उसके लिए कोई प्रेडेटर ना मिले, कोई खतरनाक, जैसे कि आजकल हो रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सारी आजकल क्या होते हैं कि मकान खासकर अर्बन एरिया में बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, और उस वजह से जो है कि गोरिया को छत बनाना, पहले के पुराने मकान जो थे वहाँ पे उसके घोंसले नेस्ट बनाए जाते थे। अब जो है गोरिया बहुत दिल्ली में, अभी दिल्ली सरकार ने तो गोरिया को, हाउस स्पैरो को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया है, और लेकिन यहाँ पे जो है फॉरेस्ट भी दिल्ली में धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा, उसमें इमारतें ऐसी हैं बहुमंजिली है तो वहाँ पे वो टिक ही नहीं पाती है, तो ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा मोबाइल टावर्स जो बहुत जगह जगह पे बनाए गए हैं, उससे ये जो है चिड़िया जो है उसके डिस्पर्सल में बहुत आफतें आ रही हैं, वो वहाँ पे है। और फिर वो गोरिया किसी तरह से अर्बन या पहाड़ी क्षेत्रों या देहाती इलाकों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो ये मांसाहारी चिड़िया होते हैं जैसे काइट्स वगैरह ग्रुप्स के या चील वगैरह, वो क्या करते हैं कि उस छोटी बर्ड्स, क्योंकि हाउस स्पैरो बहुत छोटी है, उसको खा लेती है वो बड़ी तादाद में वगैरह, तो उसके लिए बहुत सारे खतरे पैदा हो गए हैं प्रेजेंटली। और इसके बारे में यही कि उसका मैंने जैसे पहले बताया अपने इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में कि ये बहुत छोटे साइज़ की बर्ड होती है, लगभग मतलब 16 सेंटीमीटर तक की, और उसका रेंज वेट भी उसका ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 40 ग्राम तक होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें जो मेल एंड फीमेल दोनों थोड़ा डिफरेंट होते हैं। मेल जो है उसमें थोड़ा ब्लैक कलर का ज़्यादा गले पे और वो उसका सर में वो ऐसे ब्राउन लकीरें होती है, जबकि फीमेल ज़्यादातर ब्राउन इस टाइप की होती है। और ये गोरिया जो है गांव में ज़्यादा पाई जाती हैं। लोग यहाँ पे क्योंकि मकान जो है भले ही गांव में भी अब मकानों बदलते जा रहे हैं, अलग ही तरह के लोग बना रहे बहु में इमारतें, इसलिए इसमें समस्या आ रही। और इसके गोरे के पे छोटे छोटे पंख होते हैं और इसकी पूंछ भी बहुत छोटी होती है, आप तो जानते हैं हाउस स्पैरो। और उसके गले के पास काले धब्बे होते हैं खासकर मेल के, जबकि फीमेल में नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा ब्राउन इस कलर की होती है। और इसका 14 से 16 सेंटीमीटर ही ज़्यादा इतने तक लंबी होती है वो। और
मनुष्य के बनाए गए घरों के आसपास से रहना ज़्यादा पसंद करती है। ये इन्हीं की, जैसे हमने बताया कि बहुत ट्रॉपिकल या डिजर्ट एरिया में ज़्यादा नहीं रहते, वो ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन के पास ही रहती है, यानी कि जहाँ पे मनुष्य की वो है, मतलब एक तरह से हैबिटेशन, या जहाँ पे गांव रहते हैं वहीं के आसपास ही ज़्यादा चिड़िया मिलती है। लेकिन पहाड़ी स्थानों पर यह आजकल कम दिखाई देती है, क्योंकि शहरी कस्बों और गांवों और खेतों के आसपास बहुत आयत में पहले ही मिलती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे क्या हो गया है कि एक तो बहुत सारे ये मोबाइल टावर बन गए हैं, दूसरा वहाँ पे क्या कहते हैं, ये शहरी जो से बड़ी बड़ी जो काइट्स होती हैं इसको खाने के लिए आ जाती हैं, तो उनकी संख्या इसलिए संख्या पर बड़ी चिंता प्रकट की जा रही है। और पुराने घरों की तरह जगह नहीं मिल पाती, जिससे दूसरा, पहले क्या होते थे कि भाई दुकानें होती थी, पंसारी की दुकान होती थी, उनको खाना पीना मिल जाता था, छोटे छोटे अब सुपर मार्केट का जो है संस्कृति के कारण, यानी कि लाइफ स्टाइल में चेंज आया। सुपर मार्केट में क्या होता है कि भाई कुछ भी अनाज जो है बाहर तो जाता है नहीं, तो ऐसे इस वजह से उनको न तो दाना मिल पा रहा है सही, न तो उनको फॉरेस्ट मिल पा रहा है, न ही उनको जो है कोई छत घोंसला बनाने के लिए जगह मिल रही है। धन्यवाद जी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।